Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. The content that we will going to discuss today, it is from the course titled Curriculum Design and Instruction. The course code is EDUC 2118. For today's discussion, I have the following learning objectives for you. The first objective is we will going to have a recap about the topic that we have just finished in our last discussion, and that is affective domain. The second one is to describe the importance of affective domain, why it is equally important like cognitive domain, and we will going to find it out why. Another one is we're going to explain the reasons for affective domain has not been addressed more vigorously in instruction. What are the reasons behind it? And last but not the least one, exemplify validity criteria of learning outcomes in affective domain in your own programs. So once you will going to be done with all of this stuff, what you can do in your own specific program, you can develop affective domain related student learning outcome, and you can give an example of it. Whatever the material that will going to be in this presentation, I have taken it from the references that are given below, and I will going to add on these references in your Google Classroom as well. Of the Bloom's affective domain that we have already been discussed in our last discussion. So let's have a recap and give it a look again at exactly what it was. So Bloom's affective domain is actually the second domain of Bloom's. And what it is related to? It is related to our emotions, feelings, values, and attitudes specifically. So what are values and what are attitudes? I already discussed with you in our last discussion session. So what are attitudes? Attitudes are our settled feelings and our thinking about something. Something may be an object or event or person or phenomenon. So these are a settled way of thinking. Whenever that object comes in front of us or the event just reappear in our mind, we have the same kind of feeling and thinking about that event or that object or any kind of experience. So what are values? Values are actually the judgment of what we think that is important, and values are more deeper and difficult to change than the attitudes. Why? Because values are actually embedded in our social system and in our society and culture. So whatever going on in the society and culture, what actually our culture or society think that what is important, that's how we do it, and that's become a part of our value system. Value also determine our thinking and definitely our action. So we did this much in the last discussion. Afterward, we discussed the attitudes and the values in the Bloom's affective domains level. And we discussed as well that the lowest level of the affective domain is receiving phenomena. The better level than the first one is response to phenomena. The other better level is valuing. The other one is organization. And at the top, it is known as internalizers values. The important question over here is why affective domain? जबकि हम जानते हैं कि हमारी ज़्यादातर रिसर्च स्टडीज़ जो हैं उनका फोकस है कॉग्निटिव डोमेन। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है और ये हम देखते हैं और ये एक रियलिटी भी है कि हमारे स्कूल की सारी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी की ज़्यादातर एजुकेशन फोकस करती है हमारी कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर, और उसका फोकस क्या है? थिंकिंग प्रोसेस। हम कैसे सिंपल सवालात के जवाब देना सीखें और कॉम्प्लेक्स सवालात के जवाबों तक पहुँचें, कैसे हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करें कि हम सिंपल टू हायर ऑर्डर क्वेश्चंस का जवाब ढूंढ सकें, रीज़नेबल लॉजिकली उसका जवाब फाइंड आउट करके उसको दे सकें। लेकिन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ेक्टिव डोमेन ना तो स्कूल करिकुलम में नज़र आता है और ना ही हमें यूनिवर्सिटी में लगता है कि इसके ऊपर कोई फोकस है। Here is a question. Still, why affective domain? Definitely,
इफेक्टिव डोमेन की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इसका होना ज़रूरी है. Why it is important, we will going to discuss at now. The first reason why effective domain is important, we will going to see in the example below. So here was Professor John Brigs. What Professor John was doing that in 2008, he was actually addressing in a conference. There were lots of teachers sitting in front of him. So he asked a question to the teacher. The question was, as a teacher, what do you want to achieve in teaching? Afterward, he got so many responses from the teacher, and when he analyzed, he found that most of the responses of teachers were located within the effective domain. So most of the teacher क्या चाहते थे कि वो अपनी टीचिंग के बाद स्टूडेंट्स के अंदर क्या चीज़ें डेवलप करें, लार्जली क्या अचीव करें, वो ऐसी चीज़ें थीं जो कॉग्निटिव डोमेन में फॉल नहीं करती थी, इफेक्टिव डोमेन में फॉल करती थी. The example is written here. One of the teachers said, I want my students to have the same love for my discipline as I do. और हो सकता है कोई मेरे जैसा टीचर हो और वो ये कह रहा हो कि मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं कोर्स पढ़ा लूँ, स्टूडेंट के अंदर ऑनेस्टी डेवलप हो, स्टूडेंट के अंदर सेंस ऑफ कमिटमेंट डेवलप हो, और स्टूडेंट के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप. If you look at the words honesty, commitment, sense of responsibility, and in the example on the slide, love for discipline, none of them actually are related to cognitive domain. They all are related to the values and attitudes and affective domain. Now, the second reason, almost all of the studies who have been done on the workers' abilities, the worker who are actually working in their job places and why they are actually discharged from their job places, they found the same reason. Most workers are discharged because of the behavioral problem than because of their inability to perform job tasks. तो जब हम जॉब में जाते हैं और जॉब से निकाले जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब से निकाले जाने का रीज़न ये नहीं होता कि स्टूडेंट्स ज़हीन नहीं होते और उनमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ नहीं होती उन एम्प्लॉयज़ में और उनका थिंकिंग प्रोसेस हायर ऑर्डर नहीं होता, बल्कि मोस्ट कॉमन रीज़न नौकरी से निकाले जाने की होती है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. एंड इट नेवर स्टॉप्स हियर, इट डेफिनेटली कंटिन्यूज. Failure in basic courses were due to a lack of interest or enthusiasm rather than inability to master the subject matter. So in higher education level, most of the students who fail in the courses, it is not because they don't know the subject matter or they don't have a mastery on the subject matter, just because they don't have motivation to learn, to put their effort, to work hard, to achieve their goal, and lack of interest and lack of enthusiasm. Now the interest, enthusiasm, behavior problems, motivation, they all are effective domain and they determine our future success being as a professional. Another reason, there is a difference between capability and competence. Capability extends beyond competence. What does it mean by that? Competence is actually related to the mastery on our subject matter. Most of the time हमारे जो students होते हैं और mostly लोग उनको अपने subject matter पे बहुत competence हासिल होती है और वो उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. उस subject matter में चाहे lower level की thinking required हो या higher level की thinking questions required हो, वो तमाम question बड़े efficacy और ज़बरदस्त तरीके से उन सवालों के जवाब दे देते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं. लेकिन what they lack sometimes, it is capability. Capability involves an ability and a willingness to apply understandings, knowledge, skills to unfamiliar contexts and unfamiliar problems. और capability क्या है? Willingness, जिसमें आपके अंदर एक
विल होती है, ख्वाहिश होती है, एक इंटरेस्ट होता है, एक मोटिवेशन होती है। अगर वो मोटिवेशन ना हो, सिर्फ कॉम्पिटेंस मौजूद हो, तो भी वो कॉम्पिटेंस हमें इन द फ्यूचर एज अ प्रोफेशनल काम नहीं आती। Unless the student has certain affective capabilities, they are less likely to be able to use their cognitive skills and understanding across a range of environment. What does it mean by? कि जब तक स्टूडेंट्स में कुछ स्पेसिफिक इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ डेवलप नहीं होती, वो अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को भी अप्लाई नहीं कर पाते। सो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर वो इंथ्यूसिज्म, वो इंटरेस्ट, वो मोटिवेशन हो, जो कि आपको हार्ड वर्क, चैलेंज, फेलियर के आगे खड़े होना, दोबारा से उसके लिए अपनी हिम्मत को जोड़ना और उस काम को करने के लिए मोटिवेट कर सके। सो दैट इज़ अफेक्टिव डोमेन, एंड दैट्स व्हाई अफेक्टिव डोमेन इज़ सो इम्पॉर्टेंट. Even cognitive domain is dependent upon the affective domain. Another important question is why affective domain has not been addressed more vigorously in instruction, just like cognitive domain. हमारी मोस्ट इंस्ट्रक्शन में जो आपको याद होगी कि आपके स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जाता है और किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, वो है कॉग्निटिव डोमेन. आप अपने कंटेंट एरिया को समझें और उसमें मल्टीपल लेवल के क्वेश्चंस का जवाब देना सीखें, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करें. लेकिन अफेक्टिव डोमेन को इंस्ट्रक्शन में क्यों उसी तरीके से नहीं लाया जाता जैसे कॉग्निटिव डोमेन को लाया जाता है? देयर आर सो मैनी रीजन. Affective domain is actually more complex than the cognitive domain. Let's see. Number one, imposing discipline are treated as administrative functions and performed outside the classroom except in the primary grades. जब हम इफेक्टिव डोमेन और बिहेवियरल इश्यूज को लेके आते हैं तो टीचर्स को ये लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और हमें इसे क्लासरूम में एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं. इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कोई स्टूडेंट्स की काउंसिल और कमेटी बनानी चाहिए, अनफेयर मीन कमेटी बनानी चाहिए, या स्टूडेंट के ये इश्यूज जो हैं एड्रेस अनटिल अनलेस कि आप प्राइमरी ग्रेड्स के टीचर हों और आपके लिए ज़रूरी हो कि आपने स्टूडेंट्स में कुछ स्पेसिफिक एटीट्यूड्स डेवलप करने हैं. नाउ द सेकंड वन इज credible. Honesty, organizational loyalty, or drug abuse prevention objectives dealing with values and attitude may be achieved only over considerable time. कॉग्निटिव डोमेन में जब टीचर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बनाते हैं तो जब वो अपनी क्लास में जाते हैं और अगर उनकी क्लास 50 मिनट की है तो वो अपने आउटकम उस 50 मिनट में अचीव कर लेते हैं. लेट्स टेक अ एग्जांपल, ड्रॉ एन एप्पल. सो वो 50 मिनट के अंदर स्टूडेंट को एक एप्पल को ड्रॉ करना या स्केच करना सिखा देंगे और इस क्लास के बाद स्टूडेंट एप्पल को स्केच करना सीख जाएंगे या ड्रॉ करना सीख जाएंगे. मसला ये है कि इफेक्टिव डोमेन की जो चीज़ें लाइक ऑनेस्टी, ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी और ड्रग अब्यूज़, ये हम 50 मिनट में स्टूडेंट को नहीं सिखा सकते और फिर हम नहीं कंफर्म कर सकते कि आया वो आफ्टर 15 मिनट बाद ऑनेस्ट हो गए हैं या उनमें ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी पैदा हो गई है या वो अब ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन को फॉलो करेंगे और कभी भी ड्रग्स नहीं लेंगे और ड्रग्स को डिस्करेज करेंगे. सो इस 50 मिनट के क्लासरूम स्पैन में इनमें से कोई भी इफ़ेक्टिव डोमेन अचीव नहीं हो सकता. व्हाट इट डू, ये डील करता है हमारी वैल्यूज़ और एटीट्यूड को जिन्हें हमें बार 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 कॉन्टीन्यूसली साल सिखाना पड़ता है. दैट्स द रीज़न it may be achieved only over considerable time. That's another problem कि इंस्ट्रक्शन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव से बनाना बहुत ही मुश्किल काम है. Then we might not trust a professed evidence of an attitude because of the difficulty in determining whether a response was sincere. So for example, हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट में इस दफ़ा 50 मिनट्स के बाद ऑनेस्टी के जो एलिमेंट्स हैं वो डेवलप हो जाए और स्टूडेंट ईमानदारी से अपना काम करें और हम उसके लिए असेसमेंट बनाते हैं और असेसमेंट में डेफिनेटली स्टूडेंट को पता होगा
कि टीचर ये जानना चाहती हैं कि हम कितने ईमानदार हैं और कितने ईमानदार नहीं हैं। हम कैसे इस किस्म की एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू को जज करेंगे? क्या पता स्टूडेंट हमें बेवकूफ़ बना रहा हो। जो उसका रिस्पॉन्स है वो ये जानता है कि ये चीज़ जज होने वाली है, वो सिंसियर है, आर्टिफिशियल है या रियल है। How we will going to judge this thing and how we will going to assess it. That is the reason it is so difficult to actually take affective domain in instruction. So there are some other reasons. Number one, the inability to identify and specify effective behaviors because of the imprecision of natural language. Second reason, the discussion of attitude, values, morals may be sense and indoctrination or brainwashing. बिल्कुल जब हम अपनी वैल्यूज़ और मॉरल्स को और एटीट्यूड्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि आप अपनी वैल्यू दूसरे के ऊपर इम्पोज कर रहे हो और उसको डॉक्ट्राइन करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश कर रहे हो किसी स्पेसिफिक मज़हब, अकीदे, वैल्यू सिस्टम या आइडिया के मुताबिक. So it's become political. That's another reason it is very hard to in fact embed it in our instruction. A recognition that the absence of behaviors may often be as important in the affective domain as the presence of behaviors. So ये हम जानते हैं कि affective domain को हम negatively भी ले सकते हैं और positively भी लिख सकते हैं. जैसे attitude negative भी होते हैं, attitude positive भी होते हैं. In the last discussion, we talked about punctuality that we want to develop in a student, but we don't want to develop delaying tactics or poor management of time. So that's another problem कि हम कौन सा behavior लें जिसको हम अपनी instruction के अंदर student learning outcome बना सकें. Last but not the least, an uneasiness about some of the persuasive communication methods associated with attitude change. Again, it is like this one कि जब हम students के attitude में change लाना चाहते हैं, जो हमारे communication method होते हैं वो ज़रा सख्त होते हैं, वो persuasive होते हैं, वो forceful होते हैं और कई दफ़ा teachers forceful communication students के साथ नहीं करना चाहते. That's the reason वो affective domain के साथ student learning outcome नहीं बना पाते. So student learning outcome affective domain में mostly ऐसे होते हैं जहाँ हमें student को push करना पड़ता है. उनमें कुछ attitudes develop करने के लिए we need to put some extra type of effort that may sometimes become imposition of our natural language or may become brainwashing or political, and sometimes it's become very persuasive communication related. We can do. The first step what we need to learn is that कि हम student learning outcome effective domain में बनाएं कैसे और कैसे हम एक validity criteria set करें जिसके थ्रू हम effective और achievable और measurable student learning outcome बना सकते हैं जो कि effective domain से related हो. So validity criteria क्या है? Learning outcome in the effective domain should be identified in all study programs. So generally हमारे effective domain में वो behaviors, वो attitude और value system होते हैं जो चाहे कोई भी program हो उसमें वो useful होते हैं. अगर वो BS zoology के student हैं, BS mathematics के student हैं, BS English के student हैं, तो ये attitude equally तमाम subject area में relate हो सकते हैं. For example, commitment, responsibility, honestly, not doing the plagiarism, taking care of the deadline and doing your work on the time schedule, cooperation, coordination, respect for others. So ये वो larger effective domain के learning outcomes हैं जो आप किसी भी subject area में actually डाल सकते हो. Writing of learning outcome is complex task. Why? Too detailed or too narrow learning outcome limit the creativity of participants in studies. And too general outcomes with wide definition not showing evidence of studies. So अगर हमारा student learning outcome बहुत narrow होगा या बहुत ज़्यादा in detail में होगा तो उसका हमें नुकसान भी हो सकता है. वो क्या हो सकता है? It will going to limit the creativity of participants. So
Writing down a student learning outcome from the affective domain, it is a tricky job, but we are going to see that how we can do it even effectively, regardless of its complex nature. Learning outcomes defined in an appropriate way help a student to understand what is expected from him or her. So once we have a validity criteria हमें मदद करती है ऐसा affective domain का learning outcome लिखने में जो कि क्लियरली डिफाइन करता है कि हम स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट ने क्या एग्जैक्टली करना है, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, without any confusion. Let's begin with the criteria 1. The criteria 1 is description of a learning outcome by a single verb. Such a statement is more explicit. Ambiguous or complicated definitions should be avoided. The verb is recommended to be used in the infinitive form. That is, to cooperate, to initiate, to support, etc. Let's take an example of lots of verbs that actually we can use in affective domain and making student learning outcome. So here they are. Teaching and learning level of affective domain हमारे पास सबसे ऊपर आ रहा है. Receiving और attending level का जो हमारा पहला डोमेन और सबसे लोअर डोमेन है, उसमें हम किस किस्म के एक्शन वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक्सप्लिसिट हो, जो कि easy to define हो और बिल्कुल भी ambiguous ना हो. Take interest in, listen, ask, pay attention, notice, accept, follow, tolerate, acknowledge. The better level is the responding, the action verb, perform, answer, cooperate, communicate, discuss. Another higher level of affective domain is valuing. And what are the verbs that can going to be defined for this level? Exhibit loyalty, initiate, express attitude, invite, choose, assume responsibility. For the organization, we have these action verbs: balance, combine, classify, arrange. And for the highest level of affective domain, that is internalization, we can use these action verbs to develop a student learning outcome, like exemplify, defend, solve, modify, maintain, support, justify behavior, advocate. Criteria number 2. Focus of a learning outcome on a student. A learning outcome should tell what a student should be able to do at the end of the study, not on the teacher's activities during the study process. What is the difference? हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ये बताते हैं कि मेरी क्लास पढ़ाने के बाद स्टूडेंट क्या करेगा, वो किस चीज़ को करने के काबिल हो जाएगा. हम ये नहीं बताते कि मैं एज अ टीचर क्या करूँगी. तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का फोकस कहाँ पे होना चाहिए? ऑलवेज ऑन द स्टूडेंट. What student will going to do after your 50 minutes class? Or for the criteria 2, let's take an example of affective domain. For example, discussion could be initiated by a student, but the definition of a learning outcome should show what kind of discussion students should be able to initiate. For example, हम ये कह सकते हैं affective domain का जब हम student learning outcome बनाएंगे कि स्टूडेंट खुद से डिस्कशन को इनिशिएट करना सीखेगा और वो डिस्कशन को खुद से आगे लेकर आएगा और अपना टॉपिक प्रपोज करेगा और वो बताएगा कि हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करनी चाहिए. सो एक्चुअली डिस्कशन कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड करता है. टीचर को यहाँ पे क्या देखना है इसको इफेक्टिव डोमेन से रिलेट करने के लिए? The outcome should show what kind of discussion a student should be able to initiate. Let's take कि स्टूडेंट एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर क्या ब्रेवली खड़ा हो सकता है और अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकता है. फॉर एग्जांपल, क्या स्टूडेंट क्लास में इस डिस्कशन को इनिशिएट कर सकता है कि हमें चीटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमें डिफरेंट टीचर्स के बारे में कंप्लेन
क्यों नहीं करनी चाहिए. So that is a kind of a discussion that requires some other kind of capability from him or her, and these capabilities fall in authenticity, in honesty, in transparency, and they all belong to the affective domain. Here is the criteria 3. Conformity of a learning outcome with its purpose. A learning outcome at the level of a study program should fit for the following. Number 1. Purpose of this program. जो आपका प्रोग्राम है उसके पर्पस से आपका स्टूडेंट लर्निंग आउटकम मैच होना चाहिए, उसे कंफर्म करना चाहिए. अगर हम कोर्स पढ़ा रहे हैं रिसर्च का, तो उसका स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम जो होगा वो रिसर्च के कोर्स से रिलेटेड होगा, प्रोग्राम से रिलेटेड होगा. अगर आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो वो आपके प्रोग्राम से रिलेटेड होगा. अगर वो ज़ूलॉजी और बॉटनी या कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो उसके कई लर्निंग आउटकम उन स्पेसिफिक प्रोग्राम के पर्पस के साथ रिलेट हों. नंबर 2, द स्टडी एरिया. क्या वो स्टूडेंट जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वो टीचर जो सब्जेक्ट का टीचर है वो सब्जेक्ट एक टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट है, या वो सोशल साइंसेस से बिलोंग करता है, या वो लैंग्वेजेस से बिलोंग करता है, या वो साइंसेस से बिलोंग करता है. सो आपका स्टूडेंट लर्निंग आउटकम आपकी स्टडी एरिया के साथ भी कंफर्म करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए. स्टडी फील्ड. आपका जो स्टडी एरिया है उसमें आपकी स्पेसिफिक फील्ड क्या है. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सोशल साइंसेस. सोशल साइंसेस के अंदर साइकोलॉजी आ सकती है, एजुकेशन आ सकती है, और सोशियोलॉजी आ सकती है. तो सोशियोलॉजी या एजुकेशन या साइकोलॉजी जो भी आपकी स्टडी फील्ड है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम उससे भी रिलेट करना चाहिए. Student learning outcome should conformity with the mission and goal of higher education institution as well as other factors. Criteria number 4. जब हम student learning outcome बनाते हैं तो we also give it a look with this criteria. It should be correlated among learning outcomes. Learning outcomes should complement one another without any duplication. The number of learning outcome in affective domain increases in the study field where attitudes and values are important with the purpose of this field. For example, in the field of social work. So what does it mean by कि हमारे जितने भी student learning outcome हैं affective domain के, उन्हें आपस में co-relate करना चाहिए, वो match करना चाहिए, और बिल्कुल भी वो duplicate नहीं करना चाहिए. कई हमारे सब्जेक्ट एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ढेर सारे इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बना सकते हैं. यहाँ एग्जांपल दी हुई सोशल वर्क. सोशल वर्क के अंदर क्या हम बना सकते हैं? हम ये बना सकते हैं रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और क्या बना सकते हैं? रिस्पेक्ट फॉर अदर ओपिनियन एंड रिस्पेक्टफुल वे टू नेगोशिएट कॉन्फ्लिक्ट विद द डायलॉग एंड बी पेशेंट, बी काइंड, कंसिडरेट, बी अ गुड लिसनर. सो ये तमाम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है इफेक्टिव डोमेन के. अब स्टूडेंट को पेशेंट भी होना है, अच्छा लिसनर भी होना है, उसे डाइवर्सिटी के साथ काम करने का तरीका भी आना चाहिए. अगर उसके ओपिनियन से सोशल वर्क के दौरान लोग डिसएग्री करते हैं तो वो हम्बली डायलॉग करना भी जानना चाहिए, और उसे काइंड भी होना चाहिए, और उसे दूसरों की बात सुनने के लिए पेशेंस भी होना चाहिए. अब ये तमाम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है और ये आपस में को-रिलेट करते हैं, पर ये डुप्लीकेट नहीं करते. That is the last criteria. Relationship between a learning outcome and assessment of its achievement. So जब हम student learning outcome बनाते हैं तो हमें ये चीज़ जाननी चाहिए कि there should be a relationship between the learning outcome and the assessment of its achievement. आप उसको assess कैसे करोगे कि student में ये student learning outcome develop हुआ या नहीं हुआ. आप स्टूडेंट में कमिटमेंट डेवलप करना चाहते हो कि वो अपनी असाइनमेंट्स को प्रॉपरली करें और उनको उनकी डेडलाइन तक कंप्लीट करके आपको ऑन टाइम दें. सो कमिटमेंट टू योर जॉब. अपनी फुल एफर्ट लगाएं और तमाम डेडलाइंस को फॉलो करें. अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बना तो लिया, पर आप इसको असेस कैसे करोगे कि ये अचीव हुआ या नहीं हुआ. So let's take an example here. To adopt a positive attitude towards a democratic process. तो हमारे पास एक स्टूडेंट लर्निंग आउटकम
और वो ये है कि हमारा कोर्स पढ़ने के बाद या ये प्रोग्राम को पढ़ लेने के बाद स्टूडेंट में ये इफ़ेक्टिव डोमेन से रिलेटेड कैपेबिलिटी डेवलप होगी। वो क्या है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप होगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए। लेट्स से कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर चीज़ें आती हैं वोटिंग, और वोटिंग में आता है कि मुख्तलिफ लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं। वो मुख्तलिफ सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। वो औरत भी हो सकते हैं, मर्द भी हो सकते हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के मज़हब, अकायद और कास्ट सिस्टम से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं, और उन्हें पूरा राइट होता है कि वो इलेक्शन में खड़े हों। और हर बंदे को इक्वल राइट होता है, औरत मर्द किसी भी मज़हब या मसलक के, कि वो आके वोट करे, और जिसके वोट सबसे ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट में क्या चीज़ डेवलप हो? पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए। सो आपने इसको अचीव करने की जैसे भी कोशिश की इंस्ट्रक्शन में। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब आप इसको असेस कैसे करेंगे कि क्या ये एटीट्यूड डेवलप हुआ या नहीं हुआ। फॉर द असेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, फिर मेथड बताना पड़ेगा। Assessment criteria हो सकता है the positivity of an adopted attitude towards a democratic process. So हम क्लास में कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें क्लास का CR/GR इलेक्ट होगा, और जो CR/GR बनना चाहते हैं वो अपने नाम देंगे, और हम देखेंगे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को कि उनका एटीट्यूड क्या है इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ। और इसको असेस कैसे करेंगे? हम चेकलिस्ट बना सकते हैं पर स्टूडेंट, और देख सकते हैं उस चेकलिस्ट में कि स्टूडेंट का रिएक्शन क्या था जब क्लास में किसी बच्चे ने खड़े होकर कहा कि मैं भी इलेक्शन में खड़ा हूँगा। क्या स्टूडेंट उस पर हंस रहे थे? क्या स्टूडेंट उसको अप्रिशिएट कर रहे थे? या स्टूडेंट हम्बली एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर रहे थे कि व्हाई नॉट, लेट्स टेक अ पार्ट इन इलेक्शन। सो उनका क्या बिहेवियर था वो थ्रू द चेकलिस्ट हम उसे देख सकते हैं। दैट इज़ अ क्राइटेरिया नंबर 5. Here is the last slide of this presentation, and what I have done कि मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखी हुई है, जिसमें एक टीचर है जो कि क्या पढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजिकल साइंसेस, और उसने अपने स्टूडेंट के लिए अफेक्टिव डोमेन के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बनाए हैं, और उसने हर लेवल का स्टूडेंट लर्निंग आउटकम डेवलप किया है। सो ये जो हमारा टीचर है टेक्नोलॉजिकल साइंसेस का, उसने सबसे पहला इफेक्टिव डोमेन का जो लेवल है रिसीविंग और अटेंडिंग, जो कि सबसे लो लेवल है, उसमें उसने जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम डेवलप किया है वो ये है, टेक इंटरेस्ट इन इनोवेशंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल साइंसेस। सबसे लोअर इफेक्टिव लेवल पे स्टूडेंट क्या करेंगे, एटलीस्ट वो इंटरेस्ट लेंगे उन नई नई चीज़ों पे जो टेक्नोलॉजिकल साइंसेस की वजह से बनी है। इंटरनेट है हमारे पास, इस वक्त जूम है, मीट है, गूगल क्लासरूम है, और बहुत से ऐप्स हैं। एटलीस्ट अगर वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करता तो सबसे पहले वो उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, एंड दैट इज़ द अफेक्टिव डोमेन। सेकेंड लेवल जो कि हायर लेवल है, दैट इज़ रिस्पॉन्डिंग। स्टूडेंट क्या करेगा, वो डिस्कस करेगा टेक्नोलॉजिकल साइंसेस की इनोवेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। जब कभी भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे क्लासरूम में बातचीत होगी, वो उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा और वो अपने आइडियाज़ और अपनी नॉलेज को शेयर करेगा। उससे बेहतर लेवल है इफेक्टिव डोमेन का वैल्यूड। उस लेवल पे स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम टीचर ने क्या बनाया है, इनिशिएट डिस्कशन ऑन इनोवेशंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल साइंसेस एमंग पीयर्स। वो इनिशिएट करेगा खुद से डिस्कशन, वो खुद से आगे चीज़ें बताएगा कि आज मुझे ये पता चला, इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में पता चला, दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग, और वो अपने दोस्तों से उसके बारे में शेयर करेगा। उससे बेहतर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें एग्जांपल क्या है हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की, डिस्टिंग्विश एक्सेप्टेबल इनोवेशंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल साइंसेस। देन द लास्ट एंड द हाइस्ट लेवल है इंटरनलाइजेशन, and here we have an example of a student learning outcome. Student will going to use innovations of technological sciences in daily life. So that's how student जब इंटरेस्ट लेता है, क्लास में डिस्कस करता है, बाद में खुद डिस्कशन इनिशिएट करता है, और मल्टीपल इनोवेशंस को देखता है और उनको एक्सेप्ट करता है और उनमें फ़र्क जानता है, बाद में उन्हें वो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ लेवल्स पे, प्रोफेशनल, एकेडमिक, पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को इस्तेमाल करता है। दैट हाउ हमारा
अफेक्टिव डोमेन रिसीविंग से लेकर इंटरनलाइजेशन तक मूव ऑन करता है. सो टीचर्स अफेक्टिव डोमेन को अपनी इंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं. ये अलग बात है कि ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम 50 मिनट की क्लास में अचीव नहीं होंगे, पर मुख्तलिफ स्लॉट, मुख्तलिफ सेट्स और मुख्तलिफ टाइम ड्यूरेशन के अंदर आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हो सकते हैं. Because here it is. We have finished with our stuff. I hope that you will get it. Or if you have any kind of issues or problem, please ask question to your teachers. Thank you so much.